अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बांग्लादेश को इतना आगे लेके चल रही हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और इतना कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो बांग्लादेश के बनने से भी बहुत साल पहले जो है वो आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान में इतनी तरक्की क्यों नहीं हो सकी? दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है वो इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान उस तरह से जो है वो तरक्की नहीं कर पाया? आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश अ न्यू एशियन पावर ऑन द राइज, पाकिस्तान लीडर्स हैव फेल्ड देयर पीपल। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। Bangladesh has had to confront several hurdles since its 1971. founding in 1971. Yes. From hunger and poverty to insufficient power supply and rising radicalism, Bangladesh has faced and continues to face many challenges. Dhaka, the megacity and country's capital, however, has experienced an exceptional period of economic growth in the last few years under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. "2022 finished with a bang in Dhaka, with the country's very first metro rail opening. Large numbers of commuters were seen lining up in front of the metro stations in Uttara and Agargaon, all eager to ride. With the newly inaugurated metro train service, the recently opened Padma Bridge, and the ongoing construction of a new airport terminal, Bangladesh is experiencing a period of growth and excitement. Metro train. The nation is establishing and implementing the critical infrastructure needed to move into a new era of modernization. ফ্যামিলি সহ নিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ ঘোরার জন্য খুব ভালো লাগতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ। এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার আজকে সকালবেলা চলে এসেছি মেট্রো রেলে উঠতে, কারণ মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো। এত বড় স্বপ্নটাকে আসলে বাস্তব রূপে দেখতে খুবই ভালো লাগছে, এর জন্য ঘুরতে যাওয়ার জন্যই চলে এসেছি। Bangladesh is experiencing major economic advancement and is on track to graduate from the United Nations least developed countries list by 2026. Prime Minister Sheikh Hasina and her political party, the Awami League, have been in power since 2009. Under her leadership, the country has achieved many economic milestones and human development also continues to improve. However, Bangladesh still has many challenges she must face. The fight against radical Islamists still rages, for example, as they continue to pose a significant threat to the country's economic growth and modernization. 2022 proved to be a year of many achievements across various sectors for Bangladesh, as the country registered a whopping growth of 7.2% amid a global slowdown. It is also noteworthy that Bangladesh's march towards economic prosperity has always been aided by its all-weather friend, India. I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful. India's investments and bilateral trade have greatly benefited its neighbor. Both countries not only share physical borders, but many cultural similarities as well. As a result, significant progress has been made in recent years in enhancing the connectivity between New Delhi and Dhaka.
The relationship between India and Bangladesh not only benefits the two countries, but also plays a crucial role for the political and economic stability of the region. New Delhi and Dhaka have already stated that they would step up cooperation to counter terrorism, violent extremism, and radicalization in the subcontinent. Delhi's commitment to support Dhaka is critical for a peaceful and stable South Asia. The scenes in Karachi are devastating, with many queuing for hours for a bag of subsidized wheat flour. With the price of a 10 kg bag of flour reaching 1,600 Pakistani rupees, approximately 7 USD, a great many of Pakistani citizens can no longer afford to buy basic food necessities from shops. Recently, the Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, too acknowledged the dire situation his country had gotten itself into, and said that it was a matter of shame that a nuclear power had to resort to begging. तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये तकरीबन कल का भी यही मामला पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ अब मजबूर हो गया अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है आगे क्या होगा. Pakistan's citizens continue to suffer due to the multitude of crises the Islamic nation has been facing. Political volatility, rising food inflation, a worsening economic crisis, and devastating flooding have all combined to put Pakistan on the verge of collapse. According to the State Bank of Pakistan, the country's foreign exchange reserves have fallen to 4.3 billion USD, the lowest level since February of 2014. Containers of food items, medicines, and other goods remain stuck at ports across the country due to the rapidly depleting foreign exchange, leading to a shortage of essential goods. यार गवर्नमेंट से मैं यही कह सकता हूँ कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ियाँ बड़े लोग जो अमीर लोग लेते हैं उनके रेट बढ़ाओ आटे पे क्या रेट बढ़ा रहे हो यार आटे आप कर्जा लेके कहीं से भी आटा ले आओ दूसरी चीज़ों पे आप टैक्स लगाओ कुछ भी करो जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं अभी आटे पे बढ़ा रहे हो अमीरों को तो उनको तो परेशानी तो हमें ही हो रही है ना तो आप आटा सस्ता करो बाकी चीज़ें बाढ़ में जाए जो करनी है वो करो. According to the World Bank, Pakistan's economy is expected to grow by only 2% in the current fiscal year. It is expected that poverty in the poorest regions of Pakistan will worsen. Further, the national poverty rate may increase by 2.5 to 4 percentage points, pushing between 5.8 and 9 million people into poverty. The struggle for Pakistanis seems infinite, as macroeconomic risks in the country remain high and uncompromising. A large current account deficit, high public debt, and a lower demand from its traditional export markets continue to keep Pakistan on the edge of complete collapse. जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो. नो डाउट बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है. पिछले जो है 4-5 सालों में बांग्लादेश ने अपने आप को मनवाया है और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं 2022 के एंड में जिसमें एक पद्मा ब्रिज है जो कि बांग्लादेश की हिस्ट्री का एक सबसे बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. इसके अलावा 2022 के एंड पे जो है वो मेट्रो ट्रेन का जो उनका प्लान था वो कंप्लीट हुआ और मेट्रो ट्रेन का जो प्लान है नो डाउट मतलब ऐसी लुक आती है जैसे बांग्लादेश में नहीं वो कोई बाहर की कंट्री हम देख रहे हैं और जो बांग्लादेश के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. तो ये सब कुछ जो है वो शेख हसीना की वजह से हुआ कि वो बांग्लादेश के लिए जो है वो बहुत मेहनत से बहुत स्ट्रेटजीज़ बना के काम कर रही हैं
इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्रिजेस और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्काई स्क्रैपर्स। और अगर ढाका को देख लिया जाए तो ढाका आज का मॉडर्न सिटीज़ में शुमार होने लगा है। और पाकिस्तान में जो है वो जो क्राइसिस चल रहे हैं, आटा लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं, बिल्कुल सच है। ये पिछले दिनों में ऐसे ही सिचुएशन रही है कि आटा लेने के लिए लोगों को लाइन्स में खड़ा होना पड़ता है। तो ये जो करप्ट हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि बांग्लादेश जो है वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ और इतना आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो उनको आटा लेने के लिए अभी तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। और कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं वैसी वीडियोस पे रिएक्शन लेके आऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।